than a century ago has not lost any importance, and it keeps inspiring the humans to walk on the path of enlightenment. The goal is to walk on the path of enlightenment and not get distracted by petty and superficial goals. Whether we see ourselves as individuals or identify as a part of a group or a part of any institution, we all are driven by the objectives or goals that are set forth for us. To achieve these goals or objectives, it is necessary that we keep ourselves motivated, either on our own or through a motivational guru. For today, we have requested and are privileged to have with us among Shri Sunil Keswani ji, who shall motivate us to keep moving on the path of righteousness. I'll give his brief introduction. Sunil Keswani ji is a motivational and corporate trainer and a versatile scholar and trainer. He holds a master's degree in commerce from Delhi University, MA from IGNOU, and doctorate in education from LPU. Sir has a hardcore corporate experience of total 35 years, having worked in the marketing divisions of large companies like CMC Limited, Shriram Pistons, and Ring Limiteds. For the last 28 years, he's actively involved in conducting training and development programs, workshops, panel discussions in major management and communication areas in lead companies. He has so far trained over 36,000 delegates and students. He has earlier conducted regular talk shows on All India Radio, AIR, on personality wellness. We welcome you, sir. I request you to please join us on the dais, Mr. Keswani. We welcome you, sir. Before I invite Keswani ji, I request our Honorable President, Sir C.S. Manish Gupta ji, to please present a planter as a token of respect. Thank you, Manish, sir. Dear brothers and sisters, it's really my privilege and honor to address this August gathering, and that too in the month of January 2024. It's such a heartwarming feeling to have our lots of energies, Jazba, and of course our senior leadership of ICSI. सच पूछिए तो मुझे आज आप सबको देखकर मुझे ये कहते हुए बड़ा वो हो रहा है, खुशी 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 कि जैसा मैडम ने अभी बताया कि this is the first time in perhaps all these past years that we have a gathering close to 1,000 at New Delhi, and that too of comprising of all our future leaders coming from all over Pan-India. मैं तो कुछ ऐसा कहूँगा, आज सुबह की बात, today's morning only, one of my relative from Jaipur gives me a call and asked me, how is the mausam in Delhi? And do you know what I said? The mausam is awesome. The mausam is awesome. मैं तो ये भी कहूँगा, I say, कि ये सुंदर सी ठंड, ये लाजवाब ठंड, और उसके ऊपर ओवर एंड अबव ये आप और हमारे बीच ये नजदीकियां, that really makes a difference.
That really makes a difference. मैं तो ये भी कहूंगा, आपके चेहरे पे ये जो एक सुंदर सी मुस्कान, हर्षो उल्लास, उमंग, तरंग, भाई वाह, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि सोचिए, अगर आपकी ये अच्छी सी स्माइल, जिसको हम कहते हैं मुस्कान, अगर इस प्रोग्राम की महफिल को इतना बेहतरीन और लाजवाब बना सकती है, सोचिए अगर आप जिंदगी भर स्माइल करें तो आपकी जिंदगी कितनी अच्छी बन सकती है। एंड दैट्स अ ट्रू फैक्ट। एंड दैट्स अ ट्रू फैक्ट। मैं तो यहां तक भी कहूंगा, why to be sad and have wrinkles on your face when you can smile and have dimples on your face? और अगर किसी के चेहरे पे पिंपल्स हैं, कोई फर्क नहीं। Dimples are any day better than even pimples. तो इस बात का प्रतीक देने के लिए और इस बात की गवाही देने के लिए कि हमारे यहाँ लोग, जो हमारे डियर स्टूडेंट जो यहाँ बैठे हैं, वो केवल जिंदा ही नहीं, जिंदा दिल हैं, तो क्या हम अपने लिए एक बार जोरदार, जानदार, शानदार ताली बजा सकते हैं? Wow, that's wonderful, sir. पर हमारे में से कुछ काउंसिल मेंबर्स जो हमारे फ्रंट रो में बैठे हैं, इस बात के चश्मदीद गवाह हैं कि कुछ साल पहले ऐसे ही लेवल का प्रोग्राम जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में कंडक्ट हुआ था, जब हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर श्याम साहब थे। और बाय गॉड, उन बच्चों की जो तालियों की जो गूंज थी, उस बात को आज 8 साल से ऊपर हो गए, मगर आज भी हमारे कानों में इतनी ताजा है जैसे इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या हम देखें किसमें कितना है दम? एक बार फिर एब्सोल्युटली ग्रेट, great. Let us see the capacity. Oh, great. अब के बाद अगर आपको कोई मेरी बात पसंद आए या अपने में से किसी साथी का जवाब या प्रश्न पसंद आए, तो उसका इकरार हम एक जोरदार तालियों से कर पाएंगे। If you really ask me from the core of my heart, I have got one of the highest respect and honor for the CS profession. You need to understand why. 2 strong reasons. This is among the top 3 professions in the country which has no quota and no reservation. Do you get the intensity of the statement? It has no quota and no reservation. Sir, madam, each and every student sitting here, you are sitting here primarily on the basis of your merit, and merit alone is the criteria. What an idea, Sirji. What an idea, Sirji. The criteria is not your gender. The criteria is not the color of your skin. The criteria is not your age. आप गांव से हैं, शहर से हैं, महानगर से हैं. How does it make a difference? Merit alone is the criteria. And in whichever profession we have merit alone as a criteria, that profession is always and always would be honored and respected. For sure. For sure.
अगर आप मेरे दिल से पूछें और मेरी नजरों से देखें, आई सी ईच वन ऑफ यू एज एब्सोल्युटली द रोल मॉडल्स ऑफ द सोसाइटी। जी हाँ, रोल मॉडल। कितना अच्छा लगता है कहलवाते हुए कि आई एम द रोल मॉडल। आज पता है हमारे देश में चैलेंज क्या है? हमारे पास मॉडल्स तो बहुत हैं मगर अफसोस रोल मॉडल बहुत कम है। दैट्स वेयर स्वामी विवेकानंद जी, जिनकी आज जन्मदिन की पुण्यतिथि है, जिनके पुण्यतिथि पे आज हम यूथ फेस्टिवल और यूथ डे भी मनाते हैं, हु बेटर एग्जाम्पल देन हिम ऑफ द बीइंग द रोल मॉडल। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, which I feel very emotionally, it's not alone that you have chosen this profession. By profession, I mean the CS profession. This profession has also chosen you. इतनी बात फैक्ट है। इसको हिंदी में कहते हैं, सुनना ध्यान से, जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिसको आप ढूंढ रहे हैं वही तो आपको भी ढूंढ रहे हैं। ये वैसे टैगलाइन है एक matrimonial.com की ऑन द लाइटर साइड, ऑन द लाइटर साइड, कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं जनाब, वो भी तो आपको ही ढूंढ रहे हैं। सर, मैडम, it's written in one of the extracts of Bhagavad Gita कि जो भी कोई वाक्य मीन्स इवेंट आपकी जिंदगी में हुआ या होने को तैयार है, देयर इज अ पर्पस। जो भी कोई लोग आपके साथ आपकी जिंदगी में जुड़े, इंक्लूडिंग योर फैमिली मेंबर्स, या पोस्ट मैरिज जुड़ने को तैयार हैं, कितने खुश हैं लड़के सुन के नहीं, खुशी का मौका भी है कि पोस्ट मैरिज जुड़ने को तैयार हैं, देयर इज अ पर्पस। यूं ही कोई राह चलते किसी को नहीं मिल जाता। सर, फ्रैंकली स्पीकिंग, इवन दिस मीटिंग ऑफ आवर्स टुगेदर एंड विद योर compatriots is not a matter of coincidence. I would say we were destined to meet. While I entered this great stadium and while I was witnessing or noticing all the excitement, the smiles, the enthusiasm, the josh, the umang, the tarang of all those participants who were coming this way, I could very well sense that there is an element of positivity. मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा, ये प्यार तो होना ही था, ये प्यार तो होना ही था। Sir, madam, please understand, people come in your life for a reason or a season or forever. Make the best of it. वो कौन सी एक फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की कुछ साल पहले, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये पल ना होंगे दोबारा, ये साथ ना होगा दोबारा। Let's make the best of it. I would say the purpose of organizing this great seminar cum program for 2 days is not to make you a professor of a subject. No, that's not the intent. The basic intent is to cultivate a spirit of curiosity. Curiosity को हिंदी में क्या कहते हैं? To generate an element of curiosity in your personality and to make you a lifelong learner. L, L, L. And that's a fact. And that's a fact. Recently, few years back, now that I'm in the club of 60 plus, 5 years back, I picked up
PhD in the field of education, which was by any standards a big mission possible for me, a thought. Just 2 years back, see the difference in the mentality. Here we have so much, a great august gathering comprising of our dear students in such a young age bracket. But to the audience I was addressing 2 years back, they were minimum 40 to 50 years average age. Now see the difference in the mindset. As soon as I shared with them for the last 3 years, because this is a 2 years back talk, so I said for the last 3 years at this age, I am pursuing a PhD degree. So one participant raises a hand and says, question. Mecca, please go ahead. I thought some intellectual question is coming. And this person says, sir, आप थोड़ा late नहीं हो गए? I understood. Maybe he wanted to say that this decision of pursuing this one of the highest degrees could have been taken 20, 30 years back. Why now? मैंने कहा, excuse me please. एक बात आप भी क्लियर कर लें और मैं तो बड़ा जल्दी क्लियर हूं. जब तक किसी के नाम से पहले लेट नहीं लगा ना, you are never too late. जब तक किसी के नाम से पहले लेट नहीं लगा ना, you are never ever too late. So even tomorrow, by tomorrow I mean in the coming years, whenever and wherever you decide to do something beyond even what you have achieved till date, please go ahead. Don't look backward. Don't look towards all these comments which come from so many quarters. But what really matters is your, I would say, belief. And I would go to the extent of saying, please count the institute, ICSI. I'm giving a very special term which perhaps you may not have heard. Please count upon your great institute, ICSI, as your social parent. Now understand the concept of social parent. Sir, there are only two categories of people or institution in your life who will always and always help you, guide you, and in your progress, in your happiness, they'll be the most happiest person around. Which are these two categories of persons in your life? One is, of course, what? Parents. And the other one is teachers. सर, ये दो कैटेगरी के लोग हमेशा हमेशा निस्वार्थ आपकी भलाई चाहेंगे, आपकी अच्छाई चाहेंगे और आपको हेल्प करेंगे और आपको गाइड करेंगे. आज सारे के सारे टीचर्स, कुछ तो हैं, सारे के सारे टीचर्स और हमारे सारे के सारे पेरेंट्स यहाँ मौजूद नहीं हैं, बट मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली दे आर ऑल विद यू जब तक है जान. सो क्या हम उनके लिए एक जोरदार, जानदार, शानदार ताली बजा सकते हैं? And believe me, ICSI as your social parent will never ever let you down. I'm remembering this quote from a very old Greek philosopher, Socrates. Perhaps आपने इनका नाम सुना हो. हिंदी में इनको कहते हैं सुकरात. Socrates in 400 BC said, in this world, very less number of people know कि what they know is very less. It's a satire. It's a very deep statement. I don't know how many of you have been able to understand. Frankly speaking, even I was a victim of this statement in the sense, indirectly, I'll tell you my own experience. Even till 15 years back, which means I'm not talking very, very long back, even till 15 years back, I had this misconception about myself that I'm very wise. But my esteemed wife made me realize that I am otherwise.
I'm really very thankful to her for enlightening me on this very great fact of life. So, I would say why this happens is because the deeper you will go into any subject, the more you would realize you know nothing. You know nothing. So don't ever have this feeling कि yes, I am the expert. वो हिंदी में एक कहावत है छोटी सी, उसमें कहीं लिखा था, गालिब का कुछ शेर था कि दुनिया की हकीकत हम खूब जानते हैं, मगर फिर भी दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ख्याल अच्छा है. So I would say the knowledge outside to you is 1000 times more or bigger than what is inside to you. So never ever feel ki, or stop to any qualification, including the one which you are doing, because there is always a scope, there is always a means to add value to that. Sir, today I'm in front of you as a trainer, or you can say teacher, or even a faculty. But if you really ask me, I love to be a student. Jab tak hai jaan. Jab tak hai jaan. And this is the spirit. Sir, मजा तो तब आए जब कुछ मैं आपसे और आप कुछ स्पीकर्स से, हमारे एस्टीम्ड जो हमारे डिग्निटरीज यहाँ बैठे हैं, you are very, very extremely fortunate that coming not only and meeting all your batchmates or good people like your good self from Pan India, but you have this one great opportunity of meeting across the council members in person. Make the best of it. Make the best of it. So उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो मैं कुछ कह रहा हूँ आपको समझ आ रहा है, तो अपने लिए एक बार जोरदार, जानदार और शानदार ताली बजा सकते. Oh, that's really wonderful. Frankly speaking, this Yuva Utsav is being celebrated, as I said just a few minutes back, to commemorate the birth anniversary of that great Mahan Yogi and that great spiritual soul, Shri, or I would say Swami Vivekanand Ji, who visited planet Earth and especially, I would say, our country once upon a time. Whenever we talk about youth, we always mention Swami Vivekanand Ji, his inspiration and guidance, especially for the youth, is extremely commendable, mostly because he used to walk the talk. I'm remembering 3 incidences which I read as excerpt about Swami Vivekanand Ji, which are very relevant for this program and especially for our dear students who are in so big numbers present here at New Delhi. Number 1 experience of Swami Vivekanand Ji, that his famous speech in 1893 when he first visited US and especially Chicago, that of course is well known. But the best part is, after delivering that speech, next day he was scheduled to go to New York. And once he landed in New York, maybe some of you have been to that country and this place, but even if you have not been, the image of New York is very sophisticated. That is supposed to be one of the great financial capital, and people are in so hurry and people feel that they are the best in the world. They may or may not be. I'm very well aware of this concept. One is gold, solid gold, and the other is gold plated. Gold plated. So many a times you come across such people who from the distance appear to be gold, but when you meet them, talk them, you understand that's just gold plated. And many a times we find such people in New York. They are suited, booted, and the first impression would be, boy, oh man, what a great personality. But when you start talking to them or go deeper into the depth of their knowledge, you find they are absolutely in the shallow waters. अब ये सुनिए किस्सा. What happens is, Swami Vivekanand Ji, in his very famous robes which he used to wear,
just like the one which you are seeing on your screen on your left. This is a very special attire of a saffron color. This is what Swamiji was very famous about. Wherever he used to go, he used to wear those saffron color attire. So this was quite different, unlike what people in New York, suited, booted, ties and this and that. So few, 4 or 5 people were passing from there, and when they see Swamiji, they say, what a joker he is. What a joker he is. And they started laughing. The best part about Swamiji is, or was, he never got agitated. On the contrary, he smiled back to them. And he said one very great statement. और उसके बाद वो लोग फिदा हो गए उनके ऊपर. सुनिए वो statement. Swamiji says to them, dear good people from New York, in your country, a tailor makes a gentleman. In my country, it's a character which makes a true person. और कैरेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? चरित्र. It's the strength of the character which really makes a great person or a great personality in India. And they were amazed by the answer. Second incident, suniye dhyan se, it has again a relevance to you. Second incident, he was on a trip to Europe once. In one of the countries, a group of foreigners came to meet him specially. And they spoke in English. Swamiji, hello, how are you? As soon as they said, hello, how are you? Swamiji said, namaste. So few of those select people who had come, Englishmen who had come to meet him, thought that Swamiji perhaps doesn't know English. So one of them had a few knowledge about Hindi. So he said to Swamiji, Swamiji, aap kaise hain? And Swamiji replied, I'm fine, thank you. अब सुनिए, crux. So this one of the person who was in that team which had come to meet Swamiji was really surprised and slightly perplexed. He said, Swamiji, how is it that just now we asked a question to you in English and you replied in Hindi? And when we said some question in Hindi, we tried to converse with you in Hindi, you replied in English. What is this all about? Swamiji again smiled at them and said few words in Hindi which I am sharing with you. Swamiji said, when you spoke in English, आप अपनी माँ का, अपनी मातृभूमि का एक सम्मान कर रहे थे. जब आपने इंग्लिश में बोला, तो मेरा कर्तव्य था कि उसी वक्त मैं अपनी माँ यानी अपनी मातृभूमि का सम्मान करूं हिंदी में बोल के. और फिर जब दूसरी बार आपने हिंदी में बोल के मेरी माताश्री का एक सम्मान किया आदरपूर्ण, तो मेरा भी कर्तव्य था कि मैं आपकी माताश्री का आदरपूर्ण सम्मान करूं, इसलिए मैंने इंग्लिश में बोला. Now, this is something, a great thought process which this great personality had. And one last incident which I am quoting, which I read it in one of the excerpts. He went on to meet one great soul, yet another great soul who later became his guru and guru of gurus. Has any student here any idea to which person I am referring to, who ultimately became the guru of Swami Vivekananda ji? Absolutely. Ramakrishna. Ramakrishna. Quote hai book mein, when Swami Vivekananda ji for the first time
went to the home to meet Ramakrishna ji. तब ये बेल तो होती नहीं थी 100-150 साल पहले, आजकल तो टिंग टोंग. तो तब ये दरवाजे पे कुंडा वो खटकाते थे या नॉक करते थे. सो स्वामी जी ने दरवाजे पे नॉक किया तो अंदर से आवाज आई रामाकृष्ण जी की, भाई कौन है? तो स्वामी जी ने जवाब दिया, यही तो मैं ढूंढने आया हूं इधर कि मैं कौन हूं. यही तो मैं इधर ढूंढने आया हूं कि मैं कौन हूं. एंड रामाकृष्ण जी वॉज सो इम्प्रेस्ड. ही सेज कम इन, मतलब आ जाओ, हमें ऐसे ही लोगों की तलाश थी, हमें ऐसे ही लोगों की तलाश है. एंड दैट्स व्हाट स्पीक्स वेल, दैट्स व्हाट वी स्पीक्स वेल अबाउट दिस ग्रेट पर्सनैलिटी एंड द कैरेक्टर. मैं तो यहां तक भी कहूंगा, दो चीज़ें जो आपको शेयर करने की है, जो स्वामी विवेकानंद जी की मैं आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा. एंड दैट इज, तो सुनना ध्यान से. एक वर्ड होता है मैं जानता हूँ और एक वर्ड होता है मैं मानता हूँ. सर सोचो दोनों में क्या फर्क है? मैं जानता हूं और दूसरा मैं मानता हूं. क्या फर्क? मैं जानता हूं मीन्स व्हाट? मैं जानता हूं इज अ नॉलेज स्टेटमेंट बेस्ड ऑन फैक्ट्स. मैं मानता हूं इज समथिंग लाइक व्हाट? अ बिलीफ स्टेटमेंट. मैं मानता हूं. बिलीफ को हिंदी में क्या कहते हैं? सर, मैडम, एक बात क्लियर कर लीजिएगा, जहां विश्वास होता है वहां कुछ ना कुछ खास होता है, वहां कुछ ना कुछ खास होता है. एंड दैट्स एन एब्सोल्यूट फैक्ट. इसीलिए शायद हमारी जो सीएस की मिशन आप सबकी जो स्टार्ट हुई, वो कहीं ना कहीं इससे स्टार्ट नहीं हुई कि मैं जानता हूं, मैं मानता हूं. मेरा ऐसा विश्वास है कि दिस सीएस और टू परस्यू दिस सीएस, फॉर मी इट इज मिशन पॉसिबल. Because when you had joined this company secretaryship, the course, at the time of foundation, you didn't have all the answers to all the questions in the world as far as these subjects are concerned, this course is concerned, your training is concerned. You didn't have all the answers. You perhaps only had this vishwas, this belief that for me, this is mission possible. फिर जैसे जैसे आप एक एक स्टेप आगे चलते चले गए, the passage, the path becomes all clear. And that's what life is all about. That's what life is all about. So मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम. आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम. तूफान से सो लड़ने मुश्किलें तुझे गढ़ा है. मुश्किल मत कहो. दो वीडियो इकट्ठे चल रहे हैं, एक चलाइए फ्रॉम द स्टार्टिंग. इतना ही है? ओके ओके. Maybe some technical fault was there. This was an extremely good video which was highlighting the mother duck at the top, representing senior leadership, and these small ducklings beneath who were trying to surpass those stairs to reach ultimately the mother duck. In this case, we can contemplate it as the senior leadership, or perhaps a goal, or perhaps a target to reach. And time and again, these ducklings, while moving from left to right on that stairs and attempting to jump the stairs, were falling. But still, that belief, that hope, that zeal never stopped them. So this was, in fact, a case of resilience. Resilience, I hope our worthy audience understand. Resilience, perseverance,
sustained effort. This is something like at the end there was a depiction when all the ducklings had ultimately reached the mother duck. It is only after that that the mother duck left with all of them. She never missed any duckling. This was something like what our Honorable Prime Minister Shri Modi ji says, सबका साथ तो सबका विकास, तो सबका प्रयास और सबका विश्वास. And that's really wonderful. Second and the last learnings from which I'm here to share with you of Swami Vivekanand ji, उनका ये कहना था, have no fear. इसको हिंदी में कहते हैं डरना मना है. वो कौन सा शोले का डायलॉग था, जो डर गया समझो मर गया, क्योंकि डर के आगे जीत है. चलिए, जैसे अभी आपने कहा डर के आगे जीत है, तो डर के पीछे क्या है? आप हमेशा हारते नहीं हैं, आप जीते भी हैं. Loudly. Okay, sir, madam, make it very clear. अगर डर के आगे जीत है, तो डर के पीछे many a times it has been observed lack of content or low content or lack of practice. You have experienced in your phases of life wherever there are holes in the content, sir, definitely ये डर तो लगना वाकिफ था, ये प्यार तो होना ही था. So that's what I would say. Many a times Swami Vivekanand ji used to say, strength is life and weakness is death. When he said weakness, it referred to mental, physical, emotional and even spiritual. I was attending a program like this in one of the program, and the speaker said very one good statement. He said, in my life only two things have happened. Either I have succeeded or I have learned. Now see how beautifully he covers one word. What is that one word he covered up? It is failure. Sir, as long as you are learning, re-strategizing, being again re-inspired from any of your efforts which you consider as failing, sir, you still move on. Factly speaking, failure is not the opposite of success, it's a part of success. ये समझना बहुत ज़रूरी है. If failure is not the opposite of success, somewhere down the line, it is a part of success. And last, if not the least, yeah, absolutely, we can always. And last, if not the least, Swami Vivekanand ji had to say a word about compassion. स्वामी जी का कहना था, आप किसी से बेहतर हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप किसी से बेहतर हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप किसी की बेहतरी कर सकते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है. सोच के देखना. The fact that you can be of help, you can be a source of guidance for someone at somewhere, this makes a whole difference. Many a time this is a debatable topic in many of the debates and sometime in the corporates as well. I'm sharing this statement and would leave it for you to decide upon. You're not expected to give the answer just now, but contemplate this statement which I'm about to give and think what is most appropriate for you in your professional innings. There is one statement which says, I want to be the best in the world. I want to be the best in the world. And the second statement is, I want to be the best for the world. I want to be the best for the world. You have to decide the choice between passion and compassion. Many a times in today's context, and even in the corporate, we are seeing the CSR activities, we are seeing the pro-social efforts to give back to the society. Stakeholders for them are not only the investors or the bank and the financial institutions or the owners.
Stakeholders for them are public at large, society at large, and even the environment which they are sustaining. So it is a question of sustainability. Can we be the best for the world? And this really makes a difference. So compassion should always be more than passion. तो इस बात का प्रतीक देने के लिए कि आज हमारे बीच में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, of course you have always conveyed that you are energetic and live wire. So एक हम जिंदा दिली का टेस्ट कर रहे हैं. Okay? Sir, be hands free. Hands free कर दो सर. There's a big time activity which awaits you now. And this would be the finale for this talk. We'll end in the next 5-6 minutes as far as this session is concerned. So be hands free. इसको कहते हैं जिंदा दिली टेस्ट, and all will be participating it. I would in fact even request our senior leadership present here, और इस बहाने ठंड के मौसम में एक राहत भी मिल जाएगी. ओके? सो पहले तो हम एनर्जाइजर करते हैं, हाँ, उसके बाद मैं एक्टिविटी कहूँगा. और एनर्जाइजर आप समझ गए हैं. ओके? स्टार्ट स्लोली, स्लोली. फास्टर. ये तो मैं ही फास्ट कर रहा हूं, आप स्लो कर रहे हो. फास्टर. पीछे वाले लोग नहीं कर रहे, आगे वाले कर रहे हैं. देखो आपकी सीनियर लीडरशिप कितना कर रहे हैं. फास्टर. ये एनर्जाइजर है. दिस इज नॉट द एक्टिविटी, दिस इज द एनर्जाइजर. लाइक दिस. थोड़ी रिलैक्सेशन. एक बार फिर. फास्टर सर. Let's see, let's see, let's see. Okay, that's better. Now you feel slightly better. Now I think you are ready for this जिंदा दिली टेस्ट. जिंदा तो हम सब हैं, मगर जिंदा दिल कितने हैं, ये अब इस टेस्ट के द्वारा होगा. और जिस मैं सेमिनार की बात कर रहा था, जो 8-10 साल पहले जयपुर में था, जिनकी करंट और जिनका एक्साइटमेंट वॉज अनपैरेलल, वहाँ भी हमने ये जिंदा दिली टेस्ट किया था, जो मैं अभी करने जा रहा हूँ आपके ऊपर. और आपको जान के बड़ा वो होगा, मतलब खुशी 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 कि उस टेस्ट का जो रिजल्ट आया था उस वक़्त वहाँ पे 8-10 साल पहले, इट वॉज क्लोज टू 90%. मतलब इतने जिंदा दिल थे हमारे कंपनी सेक्रेटरीज और स्टूडेंट्स लाइक योर गुड सेल्फ. तो आज जनवरी 2024 में इसका सबूत और इसका परिणाम आप खुद अपनी एक्टिविटी से ही देंगे. तो शुरू करें सर. अभी आपको कुछ नहीं करना. यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट ऑब्जर्व मी. आई विल टेक ए काउंट फ्रॉम 1 to 10. हर काउंट पे आई विल डू सम एक्टिविटी. ओके? होल्ड ऑन, होल्ड ऑन. ऑन एवरी काउंट आई वुड डू सम एक्टिविटी. और आपको एकदम याद कर लेनी है, बिकॉज मैंने आपको हैंड्स फ्री करवा लिए हैं. तो इसका मतलब कहीं लिखना करना नहीं है, आपने प्योर अपनी मेमोरी पे चलना है. ओके? एंड दिस काउंट इज फ्रॉम 1 to 10. हमारे मीडिया पार्टनर्स के लिए ये बहुत अच्छी एक्टिविटी आने वाली है कवरेज की, तो तैयार रहेंगे. राइट सर, आई अगेन रिपीट, आप में से किसी को कुछ नहीं करना जब तक मैं डेमो दे रहा हूँ. इज इट ओके? अपने उस पे काबू रखिए. हाँ, दिल पे, दिल पे, दिल पे. किडनी पे नहीं, दिल पे. ओके, ओनली माई सर. जब मैं बोलूंगा 1, आपने एक क्लैप करनी है. अभी देखो मेरे एक में ही इतनी पावर है. ऑफ कोर्स आई हैव बीन आल्सो बीइंग सपोर्टेड बाय दीज माइक सिस्टम्स, सो आई हैव द प्रिविलेज. तो इसलिए आज अगर 1000 लोग यहाँ बैठे हैं तो दैट करंट इटसेल्फ वुड बी वेरी बिग. सो एक पे मैंने कहा एक क्लैपिंग करनी है. कोई नहीं करेगा, सिर्फ मैं. जब मैं बोलूँगा 2 क्लैप करनी है. जब मैं बोलूँगा 3 क्लैप करनी है.
याद करते जाइए, अभी 10 तक है। जब मैं बोलूंगा 4 तो आपने जोर जोर से हंसना है। टू योर ग्लोरी, टू योर ग्लोरी। और पूरी वो के साथ, मतलब वो एक्साइटमेंट, उमंग और तरंग के साथ। हाँ, ये होगा नंबर 4। फिर आएगा 5। आपने एक दूसरे को सामने, आमने सामने, आगे पीछे देखते हुए करना है। वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह। ये दीवारों को देख के, छत को देख के वाह वाह नहीं करनी है। जो आपके साथ जो मित्र बैठे हैं, आपके आगे, आपके पीछे, आपके लेफ्ट में और आपके राइट में, उनको कहनी है वाह वाह, वाह वाह। सर, इस पूरी एक्टिविटी का नॉट ओनली आई हैव द ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट एन एक्साइटमेंट एव जिंदा दिली, but there is a corporate purpose also behind it. I'll tell you after we finish this activity. So number 1 था 1 clap, number 2 था 2 claps, number 3 था 3 claps और number 4 है, अरे अभी सैंपल है अभी तो, और number 5 था वाह वाह, वाह वाह। और नंबर मैं कहूँगा 6 पे हमें करना है वी ऑल आर विनर्स, वी ऑल आर विनर्स। ठीक है, और जब तक मैं कोई नेक्स्ट सीक्वेंस ना करूं, आपने स्टॉप नहीं करना। एवरी सीक्वेंस इन्वॉल्व एटलीस्ट 30 सेकेंड एक्टिविटी। ओके, और इसको ना विद एनर्जी करना, ऐसे नहीं वी ऑल आर विन, नहीं, अरे थोड़ा एक्साइटमेंट हो, पता चले ना वी आर कंपनी सेक्रेटरीज। तो वी ऑल आर विनर्स, वी ऑल आर विनर्स, और विद वाइब्रेशन। ये होगा नंबर 6। और नंबर 7 अगेन, जो भी आपके आसपास मित्र बैठे हैं उनको आपने करना है नमस्ते, 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 which is a very good positive vibes from you to others. I'll tell you the corporate purpose also after this game, as I promised you. So ये आप कर सकते हैं। ये है नंबर 7। नंबर 8 पे आपने करना है जो हम हमेशा करते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं, हिप हिप, हिप हिप, हिप हिप। ये है नंबर व्हाट, 8। सीक्वेंस याद कर रहे हैं ना आप। और नंबर 9 पे आपने अपनी सीट से खड़े होना है। अभी नहीं करना, बाद में। आपने अपनी सीट से खड़े होना है और जो भी आपके लेफ्ट में, राइट में, आगे में या पीछे में जो भी व्यक्ति हैं उनसे हाथ मिलाने हैं और उनको कहना है यू आर सिंपली ग्रेट। या आप हमारे यहाँ जैसे नॉर्थ में कहते हैं तुसी ग्रेट हो। या यू कैन से इन इंग्लिश यू आर सिंपली ग्रेट। ये है नंबर 9। और नंबर 10 जिससे आपने आज की ये प्रोग्राम की शुरुआत करी थी, एक जोरदार जानदार कंटिन्यूअस में 30 सेकंड्स के लिए ताली बजानी है। ठीक है, बाद में उम्मीद करता हूं अब मैं जस्ट मेंटली रन कर रहा हूं आपके दिमाग में, सो दैट देयर इज नो मिस्टेक एनीवेयर। सर, अगर कहीं भी कोऑर्डिनेशन में मिस्टेक हो गई, अचीविंग 90% एंड बीटिंग द जयपुर रिकॉर्ड वुड बी वेरी फार अवे। हम तो चाहते हैं आज दिल्ली में ये ओल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हो और पता चले कि हमारे पैन इंडिया स्टूडेंट्स में कितना है किस्में दम। ठीक है सर, आई मेंटली रिपीट टू यू। फर्स्ट में 1 क्लैप, सेकंड में 2 क्लैप्स, थर्ड में 3 क्लैप्स, फोर्थ में हाँ बस ठीक है, और फिफ्थ में और सिक्स्थ में विद पावर। अब ठंड दूर हो गई है, अब आपको बिल्कुल विद एनर्जी कहना है। सो ये था 6th में वी ऑल, और 7th में ठीक है
नंबर 8 में हिप हिप हुर्रे, और नंबर 9 में, हाँ, आपने बाद में खड़े होना है और आपने कहीं वॉक करके नहीं जाना। हाँ, डोंट यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। अब जो भी आपके आसपास हैं, बस उन्हीं से हाथ मिलाने और कहना है कि यू आर सिंपली ग्रेट, या तुसी ग्रेट हो। और नंबर 10 तो आपने जान ही लिया, जिससे हमने शुरुआत करी थी। सो आई वुड ओनली से द नंबर एंड यू हैव टू डू द एक्टिविटी नाउ। जब तक मैं कट ऑफ नहीं करूं, आपने वो एक्टिविटी उस नंबर पे करते जाना है, बिकॉज फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो 30 सेकंड्स की जरूरत नहीं है, इट हैपेंस वेरी क्विकली। उसके बाद जो भी एक्टिविटी है फोर्थ ऑनवर्ड मिनिमम 30 सेकंड्स होगी। ओके, 90% को क्रॉस करना है। ओके, क्लोज टू 100% लाना है। कर सकते हैं? One, 2, 3, 4. Number 5. Number 6. We यहां से बहुत अच्छे। Number 7. Number 8. Wonderful. और Number 9. Great. Kindly be seated. उम्मीद है आप सब ने बोला होगा एक दूसरे को, यू आर सिंपली ग्रेट। एंड नाउ द फाइनल नंबर 10.
Whew. आप सबकी इतनी आवाज, इतनी गूंज देख के मुझे ये कहते हुए फिर बड़ा वो हो रहा है कि इतना हर्षोल्लास, दिस वॉज अनकम्पेरेबल। इसका रिजल्ट मैं अभी 2-4 मिनट के बाद देता हूं, बिफोर आई क्लोज दिस प्रोग्राम, दिस सेशन टू बी प्रिसाइज। ही सेज वंस मोर, आई हैव टू शेयर अ कॉर्पोरेट लेसन फॉर दिस, जैसे हम कहते हैं डी ब्रीफिंग। ओके, इससे पहले कि मैं कोई डी ब्रीफिंग करूं, आप में से कोई हाथ खड़ा करके लाउडली बोल सकता है कि what possibly you could learn from this exercise, this small exercise of 5 minutes? हाँ, मैडम, go ahead and speak loudly. Loudly बोलें. What she says? Networking. That's one good idea. Okay, sir. What our brother has said, that not only we generated an energy within ourselves, but we also sent across those positive vibes to others as well. Sir, आप दुनिया को वही दे पाएंगे जो आपके पास है. So once you are so positive and so energetic, you will transfer the same feeling to others, and you will develop a good networking, as our young lady said. Anybody from this side? Madam at the back. Yeah, yes sir, yes. Yeah, we became positive. Oh, did he say he became COVID positive? No. No. आजकल ये वर्ड पॉजिटिव भी बहुत थोड़ा ध्यान से देना, मतलब बोलना पड़ता है कि टेस्ट नेगेटिव फॉर दोज डिजीजेस बट एक्ट पॉजिटिव. हाँ सर. Unity, that's a big point. That's a point which I wanted to hear. Unity, excellent point, sir. Any last point, sir, at the back? Sir, laid loudly, sir. Respect and honor to each other. What an idea, Sirji. What an idea, Sirji. I mean, these are good learnings. Few of them already what I was about to share with you, but good that you have shared at them. Yes, ma'am. Oh, what an idea, Madam Ji. Did you get the intensity of the answer? In the words of Madam, I'm just reframing the words. It was an activity to show your attitude of gratitude, which is good. Which is good. Yes, ma'am. Positive self-talk, not only to your good self, but once you say wah, once you shared, shook hand with them, and once you also did namaste, this is something to respecting the other's soul. Okay, last 2 comments. Thank you, ma'am. Last, at the very last. Coordination. I do not know whether our brother knows the difference between coordination, collaboration, and cooperation. So this was factually, was it coordination or collaboration or cooperation? What was it? क्या था? अब थोड़ा confused हो गया वो. These are 3 different words. 3 different words. कोई बात नहीं. At least, हाँ, madam. It was absolutely sheer motivation, inspiration. That was very inspirational. One last count, sir. Sorry, come again, sir. Yeah, we facilitated and recognized each other's presence. This is a fact. This is a fact. हाँ, sir. Okay, ये एक बार फिर बोलना है. Obeying the command. Obeying the command. Sir, wonderful. So let me combine all the views of our great participants. I'm sure there are a few more comments also in the line because we have paucity of time. So we'll just summarize.
Sir, one, it was very clear you obeyed the command. In corporate or in your profession, to be really called as a professional, you need to be very clear about the instructions. And especially if you have no retake, number one. Second is, always and always show an attitude of gratitude, what our esteemed lady said at the back. Number three, respect and honor the souls who are around you, whether it's your office, whether it's your social media, whether it's your family or elsewhere. कहते हैं, the charity first begins at home. So if you can really be passionate and really be the love giver, sir, this really works. Fifth, I would say learning would be, believe in the philosophy of what Swami Vivekananda ji also said, have unconditional love for the people who are around you. Because where you are at present and where you want to be, the difference is the support of other people. The difference is support of other people. The more you are able to connect with the people, the better for you. And you will be the most lovable person, most wanted person, not negatively, but positively, you'll be the most wanted person anywhere in the world. So it's good that we came out with this so many good, I would say, possibilities, and there can be many more. And this is what you need to do wherever you are, at your respective cities, at your respective offices, and see what a better world this becomes. Sir, आज किसी को हराना बहुत आसान है, मगर किसी को जीताना बहुत मुश्किल है. और अब वो final moment to what I could foresee the result of this great activity. Frankly speaking, I have no doubt in my mind on 12th of January 2024 that what we have witnessed just a few minutes back, it is one of the best score which we ever have in our ICSI fraternity. It's more than 90%. It's more than 90%. Sir, यही तरंग, यही उमंग और यही जोश आप बस ज़िंदगी भर निभाएं तो देखें ज़िंदगी कितनी अच्छी बन सकती है. And we as senior leadership, the council members, your parents, your teacher, would be the most happiest person in the world to see you rise to an occasion, to see you rise to a level which is absolutely unparalleled. Our sincere best wishes to all of you and for your great patient listening. Thank you. Wonderful, incredible. I don't have words, sir. It was indeed wonderful. Thank you so much for gracing the occasion today with your kind presence. I now request CSB Narasimhan sir, Vice President ICSI, to present memento to Keswani ji as a token of appreciation and gratitude. My pleasure. Thank you, sir. Thank you, Keswani, sir.